Hello friends, welcome back to your own channel Chemistry Simplified. Ever confused how to write a chemical formula? Today is it. Today is a day where you are going to understand how to write the chemical formula in a very simple and easy way. This is the topic of class 9th Atoms and Molecules chapter 3 CBSE. So let's get started. So first of all, let us understand what is a chemical formula. Chemical formula is a way to represent a compound by the symbol of its element. Chemical formula क्या होता है? Chemical formula, it is a way to represent the compounds with the help of the symbol of the elements. In order to write a chemical formula, it is very important to know few terms. For example, what is a cation? What is a anion? And first of all, what is a ion? So let me define ions for you. Basically, ions are the charged species, and these charged species can be either positive or negatively charged. So here we can write the positively or negatively charged species are called ions. So what is a cation and what is a anion? Cation, as we have learned from metals and non-metals. What are metals? Metals are those electropositive elements which have a tendency to give. जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कुछ देने की. मेटल्स वैसे ही लोग हैं. मेटल्स की टेंडेंसी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देता है, और जो लोग देते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो रिमेम्बर, cations are those positively charged species which lose electron and get positive charge. So we can write the positively charged species are cations that lose electron. I'll give you the example also. Whereas anions, just opposite. What are anions? Anions are the negatively charged species. अगर cations वैसे species हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और फिर पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, इसका मतलब है अनायंस कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं. नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट gain electron. Okay, now let us see the examples. For example, we have sodium, that is given by the symbol Na, which is having an atomic number of 11 and electronic configuration of 281. And we have our previous knowledge that metals or non-metals वो आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? in order to attain the nearest noble gas configuration. And sodium has one electron in its outer shell which it can lose in order to acquire the nearest noble gas configuration of neon, that is 2,8. That is why sodium on losing one electron acquires one positive charge. आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो just for your understanding I am writing one minus electron and it will gain one positive. It is only for your understanding. This is the correct way of representing. Okay, so when sodium loses one electron, it gains one positive charge.
Likewise, magnesium, which is having atomic number 12, electronic configuration 282, it can lose 2 electron to acquire the nearest noble gas configuration of neon. Likewise, हम लिख सकते हैं like this, Mg, because it is losing 2 electron, that is why it will gain 2 positive charge. Another example is aluminium, which is having atomic number 13, electronic configuration 283, and हमें पता है कि मेटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, मैक्सिमम इट कैन लूज 3, so it can lose 3 in order to gain the nearest noble gas configuration of neon. Okay, तो क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, इसीलिए ये बनाता है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस. जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने पॉजिटिव चार्ज वो गेन करेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने पे 3 पॉजिटिव चार्ज. Okay, so this is the example of cations. Now, next example for anions, we can see oxygen. Oxygen is having atomic number of 8, that is 2, 6. Up, just like the sodium, which gained the nearest noble gas configuration neon, ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, so it will acquire oxygen will gain 2 electron to get O2 minus. Gain whose electron to gain the nearest noble gas configuration of neon. Like nitrogen, which is having atomic number 7, it is 2, 5. So how many electron it will require? 3 electron. So nitrogen will gain 3 electron and form N3 minus. Okay, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा. फ्लोरीन, which is having atomic number 9, so 2, 7, it needs 1 electron, so fluorine will take 1 electron and form F minus. Okay, so this is how it loses electron. Cations loses electron to gain positive charge, and anion gain electrons to form negative charge. Okay, so cations जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, अनायन जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आता है. बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक इज टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. फर्स्ट वी विल राइट द बेसिक केमिकल फॉर्मूला, देन वी विल राइट द आयनिक केमिकल फॉर्मूला. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Right. Here I am going to write a few table just for easy and not trick you with lot of formulas. I am giving you. We will first try. In today's class, we will only try first 20 elements. Okay, so I am going to make a table here from group 1, a short periodic table from our side. Group 1. Okay, there are certain elements. Maybe in later videos I will be dealing in detail. Today only in short form. Group 1, we have 3 elements: lithium, sodium and potassium. We will do only first 20 elements. Okay, so Li plus, Na plus and K plus, having plus 1 valency. Group 2, we have Be, beryllium 2 plus, we have magnesium 2 plus and we have calcium 2 plus with plus 2. Then we have group 13, boron B3 plus and aluminium 3 plus.
Then we have group 15, so nitrogen and phosphorus. Because it takes 3 electrons, so it is N3 minus, this is P3 minus. So having the negative charge, that is electrovalency is -3. Then we have group 16. Oxygen and sulfur both requires 2 electrons to complete their octet. So the electrovalency is -2. And group 17, 7 electrons in the outermost shell, so it will require only 1 electron. So here in this F minus, Cl minus. Okay. Today only we will do this much. Alright. Now today we are going to write, I'll give you first example of simple formulas. In order to write the simple formula, first one, simple formulas. For example, if I have to write the formula for methane, so what is the first step? सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to write the symbol of the element. Okay? Methane has carbon and hydrogen. What is the symbol of carbon? That is C. Hydrogen, it is H. Now, for simple formulas, we can simply write the valency. Okay? Carbon, you know that it is tetravalent. So it has a valency of 4. Okay? And hydrogen has a valency of 1. First step, write the symbol of the element. Second step, write the valency for simple formulas. Then third step, just crisscross it. Okay, so if we crisscross, we will get a formula C1H4, and we generally don't show 1, so we can write it as CH4. This is the formula for methane. Okay, second example we can see of carbon dioxide. I'm sure everybody knows the formula of carbon dioxide. That is again carbon and oxygen. Okay? Carbon, first step to write the symbol of carbon and oxygen. Second step to write the valency. Oxygen की valency अभी हमने क्या पढ़ी थी? जब भी अगर आपके मेटल के outer most shell में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, then it is same as the valency. But if it exceeds 4, then 8 minus that number of elements. So 8 minus 6, that is 2. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2. Criss cross, what we will get? C2O4. But is this the formula of carbon dioxide? No. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? We can divide the value with a common multiple, that is 2. So if we divide it, we will get CO2. This is the formula of carbon dioxide. Okay? One more form we can write, that is ammonia. Ammonia क्या है? Ammonia, it is having nitrogen and hydrogen. So nitrogen is represented by N, hydrogen is represented by H. Nitrogen की atomic number होती है 7, electronic configuration 2, 5. That means valency अगर outer most में 5 electron है तो valency कितनी होगी? 8 minus 5, that is 3. Hydrogen having 1. Criss cross हमें क्या मिलेगा? N1H3, or simply we can write it as NH3. This is the formula of ammonia. ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जिसमें हम सिर्फ वैलेंसी लिखते हैं. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. देन नेक्स्ट आई विल टेक यू टू द आयनिक कंपाउंड्स.
what are ionic compounds? Now ionic compounds here, these are the compounds which are formed by the combination of metals and non-metals. Easiest example we'll start with is sodium chloride. Okay. Now, sodium chloride. Sodium, as you can see, it belongs to which group? Group 1. It belongs to group 1. Okay, that means it will have a electrovalency of club. हमेशा याद रखना वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है. लेकिन हमने जो यहाँ पे किया है, when we are writing ionic compounds, we are writing the electrovalency. तो electrovalency पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. Ionic compounds क्या है? Ionic compounds are those compounds which are formed by the bond of metal and non-metal. तो अगर सोडियम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? We are going to write the symbol of the element. Sodium is Na. Chloride is from chlorine, so it is Cl. सबसे पहले ये लिखा. अब सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है? +1. क्लोरीन इज ग्रुप 17, इसके ऊपर क्या चार्ज है? -1. So the third step is criss-cross. So if you criss-cross, what we will get? We will write Na plus and Cl minus. Okay? Because लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी, जब हम चार्जेस कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, then in formula we don't write the positive or negative sign. और क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, so we can write it as NaCl. Okay? Another example. हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के कंपाउंड्स. Second in this series is potassium chloride. Potassium chloride. ओके, तो पोटेशियम कौन सा है? ग्रुप 1 चार्ज, सिंबल क्या है? K. क्लोरीन अगेन Cl, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है इसीलिए +1, ग्रुप 17 में है इसीलिए -1. क्रॉस क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा? KCl. Easy peasy. Okay. Next, we are going to write a compound of group 1 and group 16. That let us write sodium oxide. सोडियम सिंबल क्या है? अभी हमने पढ़ा Na. चार्ज क्या आएगा? ग्रुप 1 है तो +1. ऑक्साइड कहां से आया? ऑक्सीजन. कौन से ग्रुप का है? 16. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. इसीलिए चार्ज कितना होगा? -2. क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा? पहले हमेशा कटायन फिर अनायन, ठीक है? पहले हमेशा कटायन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अनायन. तो Na2O. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पोटेशियम ऑक्साइड. पोटेशियम क्या पढ़ा था? K. ऑक्सीजन क्या है? O. चार्ज क्या है? +1. चार्ज क्या है? -2. क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला? K2O. ये कौन सा था? ग्रुप 1 ग्रुप 16, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ग्रुप 1 और ग्रुप 15, ठीक है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 15. आप फटाफट इसे नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में मेरे. ग्रुप 15 सोडियम नाइट्राइड IDE. नाइट्राइड कहां से आया? नाइट्रोजन से. चार्ज कितना? क्योंकि कितना है यहाँ पे? 3-. क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, सो -3. फॉर्मूला क्या बनेगा? Na3N सोडियम नाइट्राइड. अब बताओ पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? नाइट्रोजन है 3 चार्ज, तो फॉर्मूला बना K3N. वेरी इजी, सिंपली. अब देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो ऐसे ही बने हैं, सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, एक ही जैसा फॉर्मूला होगा.
सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, एक ही जैसा फॉर्मूला होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 16. अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आई गिव यू होमवर्क. थर्ड, लेट अस राइट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम का सिंबल Al. ऑक्साइड कहां से आया? ऑक्सीजन से. एल्यूमिनियम कितना है? क्योंकि कितने चार्ज है इसके पास? +3. ऑक्सीजन क्या है? -2. क्रॉस क्रॉस करेंगे क्या बनेगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम का फॉर्मूला Ca. कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2. चार्ज क्या है? +2. ऑक्सीजन O. कितना चार्ज है? -2. क्रॉस क्रॉस करेंगे क्या बनेगा? Ca. कैल्शियम ऑक्साइड. It's very very easy. Whenever you practice more, you will understand it more. और जहां भी आपको डाउट होगा, I am there to help you. Okay? So these are the basic examples. There are many more questions which you will do and you will understand. Okay? So in today's class we will only discuss this much, and I am going to give you some homework, and in the next video I will take you for the examples on polyatomic compounds. So for your homework we have certain questions. Try by yourself and remember some basic points. हम chemical formula कैसे लिखते हैं? First you write the symbol of the element, then you write the electrovalency, and then crisscross. पहले का टाइम फिर anion. Do this homework. Write the formula for lithium chloride. Then potassium oxide. Then one more you write for aluminium chloride. 3 enough? Okay, I want all the answers in the comment box. Do not forget to watch my video, and please try to do this homework and mention me on the comment box. Okay, I hope today's video has tried to help you with your confusion of chemical formulas. Okay, if you like my video, do not forget to like, subscribe and share my channel. Hope to see you in the next video. Till then, have a good day. Bye.